Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to International Islamic University, Islamabad School, Sahiwal Campus online lectures. This lecture is for grade 6 for the subject of English, and we are doing our unit number 3, which is a newspaper article, and the name of this article is Climate Change Wipes Out Frogs. Dear grade 6 students, you already have done reading and explanation from this lesson, and you have done the first section of exercise, which was questions and answers. I hope you all understood and learned a lot from these lectures. Now it's our first online lecture from this unit, and we are going to begin the next section of exercise, which is speaking and listening. Then we will move towards the language part and we'll cover the topic of present perfect tense. So let's begin as the lecture number 1. In this lecture we are going to cover vocabulary work and present perfect tense. I will give you the detail of these topics and the solution of exercises from students book, and some homeworks will be assigned to you from students book and your workbook. So before we begin, make sure that you have your English students book, English workbook, English classwork notebook and your complete stationery available with you. I hope you will listen the whole lecture very carefully and attentively and write down all the things said by your teacher in your book or notebook, wherever I ask you. Grade 6 students, if you find anything difficult or anything that you don't understand or any question you want to ask your teacher, you can send a WhatsApp voice note mentioning your name, grade and subject and the lecture about which you need to ask anything, okay? So let's begin our today's lecture. Grade 6 students, please open your English students book, page number 22. Mark date and day on the top of page number 22. Okay, the topic from speaking and listening is word web. Okay, word web किसे कहते हैं? Web is a type of net, and word web means a network of some words for about any topic. अब हम देखेंगे हम किस टॉपिक पे यहाँ पे word web करने जा रहे हैं. Read the points with me. Read the information in the box above. Okay, here is a purple box and some information is given here. Let's read it. Read it with me. I am going to read the pink box on the top of this page. Put your finger on the text I am reading for you. If we produce less greenhouse gas, we may be able to slow down global warming. Dear grade 6 students, when you were learning the chapter and this newspaper article, you learned that frogs are being wiped out due to global warming and due to the environmental pollutions, etc., which is caused by greenhouse gas effects. Okay, here are some of the things we do every day that produce greenhouse gas. ऑफ कोर्स हम अपनी डेली लाइफ रूटीन में कोई ऐसी हमारी एक्टिविटीज़ होंगी जिसकी वजह से ये ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, और प्रोड्यूस होने के बाद क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग का ये कॉज बनती हैं. और ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, बहुत सारे एनिमल्स और स्पीशीज़ जो हैं वो इन डेंजर हो जाते हैं. सो लेट्स सी दैट व्हाट आर आर डेली लाइफ रूटीन थिंग्स वी डू that produce the greenhouse gas. These are carbon dioxide is produced when we drive our cars, when we use electricity produced by power plants, when we burn trash. Okay, आपको पता है जब हम कार ड्राइव करते हैं तो उसमें से जो गैस निकलती है वो भी environmental pollution का एक कॉज है. when we use electricity produced by power plants, जिनमें से बहुत ज़्यादा गैसेस एमिट होती हैं. एंड व्हेन वी बर्न ट्रैश, जब हम कोई कूड़ा करकट कोई भी ट्रैश बर्न आउट करते हैं, कोई प्लास्टिक या कोई पेपर एट्सेट्रा, तो उससे एक तो जो लैंड पोल्यूशन का वो कॉज बनती है, सेकेंडली उसका जो स्मोक होता है वो भी एयर पोल्यूशन का कॉज बनता है. उसके अलावा हम क्या करते हैं, मीथेन इज़ प्रोड्यूस्ड हाउ, व्हेन वी अलाउ ट्रैश टू डिके ओवर अ लॉन्ग पीरियड. जब हम किसी ट्रैश को, जब कोई ट्रैश जो है वो डिके होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है तो क्या होता है, मीथेन प्रोड्यूस होती है. सपोज़ आपने कोई प्लास्टिक
की चीज़ें थी या कोई आपकी गार्बेज में, आपके हाउस होल्ड ट्रैश में कोई प्लास्टिक टाइप चीज़ें थी जो कि बर्न आउट नहीं की गई और वो ऐसे ही आपने घर के बाहर उसको थ्रो कर दिया जहाँ पे भी कोई गार्बेज के जो डंप्स होते हैं वहाँ पे थे, और वो अगर डिके होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा तो क्या होगा, उससे मीथेन प्रोड्यूस होगी, और मीथेन प्रोड्यूस होने से भी क्या होगा, आपका इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ेगी, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी एंड इवेंचुअली ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, और इससे क्या होगा, बहुत सारी स्पीशीज़ इंडेंजर हो जाएंगी. Okay, we have read the information in the box above. Now next point is, in a group use a word web to brainstorm ways of helping to cut greenhouse gas emission. हमने क्या करना है, हमने एक वर्ड वेब बनाना है जो ये बताएगा हाउ टू हेल्प कट ग्रीन हाउस गैस की जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है हम उसको कैसे कम कर सकते हैं. ओके, हमने ये जाना कि जब हम कार्स ड्राइव करते हैं तब ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जब हम जो इलेक्ट्रिसिटी है प्रोड्यूस्ड बाय पावर प्लांट्स उससे होती है, और ट्रैशेस बर्न करने से होती है, और ट्रैश को डिकेन होने में जब ज़्यादा टाइम लगता है तब होती है. तो इससे हमें ये भी आइडिया हो गया कि हम क्या कर सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस कम से कम हो. इस हाउ कम वी कैन हेल्प कट ग्रीन हाउस गैसेस. सो वी कैन डू दिस, यूज़ कार्स लेस ऑफन. कम से कम हम कार्स का यूज़ करें, और उसके लिए हम क्या करें, गो बाय बाइक, गो बाय बाइसिकल एंड गो बाय वॉक. ये सारे हम अगर पॉइंट्स को फॉलो अप करें तो हम कार्स के यूज़ को लेस ऑफन कर सकते हैं बाय यूजिंग बाइक्स, बाय यूजिंग बाइसिकल, और बाय वॉकिंग towards the destination which is at the walking distance. ओके, इसके अलावा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय विंड एंड वाटर. अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को बजाय पावर प्लांट्स के उनको प्रोड्यूस किया जाए विंड एंड वाटर से तो भी ग्रीन हाउस गैसेस की प्रोडक्शन कम की जा सकती है. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय वाटर, रिसाइकल बॉटल्स, डोंट वेस्ट एनर्जी एंड मोर ट्रीज़ ग्रोइंग. ये सारे हमारे एक्ट्स अगर हम इनको फॉलोअप करेंगे तो क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस की प्रोडक्शन कम हो जाएगी. आपने ये वर्ड वेब अपनी बुक पे सॉल्व करना है. हेयर ऑन योर बुक पेज नंबर 22 द वेब इज़ गिवन हेयर. यू विल फिल दीज लाइन्स विद दीज पॉइंट्स. अगर आपके माइंड में इसके अलावा कोई और पॉइंट है एंड दैट मेक्स सेंस तो आप उसमें वो ऐड कर सकते हैं. Okay, our next topic is vocabulary work. The exercise statement is, the words that answer these questions are all in the newspaper article. न्यूज़पेपर आर्टिकल में बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हुई हैं, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज़. अब यहाँ पे यू कैन से आपको उन साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज़ के लिए डेफिनेशंस गिवन है. आपने डेफिनेशन को देख के गेस करना है कि ये कौन सी टर्मिनोलॉजी के बारे में बात की गई है. फर्स्ट वन इज़, read the first question, which is, what do we call an animal that lives on land and also in water? The animals that live in land as well as in water, like frog, like all the alligators, etc. These animals can live on land and also in water. This type of animals, these types of species are called amphibians. Okay, you will write down the solution in front of these sentences on your book. इस एक्सरसाइज का सोल्यूशन आप अपनी बुक पे करेंगे एंड सोल्यूशन विल बी रिटन इन फ्रंट ऑफ एवरी सेंटेंस. सो प्लीज़ राइट डाउन एम्फीबियंस in front of the first sentence. Second one is, what adjective can be formed from a noun catastrophe? A noun is catastrophe and we have to form an adjective. How can we form a noun into an adjective? Yes, we can add some suffixes to the nouns to make them to convert them into adjectives. And when we add a suffix with the noun catastrophe, it becomes catastrophic, and catastrophic is an adjective. So the answer is catastrophic. आप ये नोटिस करेंगे कि जितने भी आंसर्स हम इस एक्सरसाइज में देंगे वो सारे आंसर्स आपको, वो सारे वर्ड्स इस
लेसन में मिलेंगे. थर्ड वन इज़ द गोल्डन टॉड इज़ एन डैश स्पीशी. गोल्डन टॉड जिसके बारे में हमने यहाँ पढ़ा है वो कौन सी स्पीशी है, वो इंडेंजर्ड स्पीशी है. द मशरूम्स वी ईट आर टाइप ऑफ, the mushrooms we eat are the type of a fungus. The dash of a country is the average weather measured over many years. You grade 6 students, you already have learned about this in your SST and your geography books, that what of a country is the average weather measurement. This is climate. Climate is the any area's average weather measurement. Okay, grades. Okay, sentence number 6 is find another word in the article that is similar in meaning to each of these words. Here some words are given and you have to find out their replacement words from the story. The first word is completely and its synonym can be found in this sentence, which is entirely. Next is seriously, swearly, perfect, ideal, worldwide, global. Write down these solutions on your book, page number 22. Have you done? Okay. Come to the next page, page number 23, and we are going to begin language part. And the first topic from language portion is present perfect tense. What is a present perfect tense? Present perfect tense tells us about something which has recently happened in the present. अभी recently present में कोई action जो complete हुआ है, इस type के sentences को हम क्या कहते हैं? Present perfect tense. What is the formation of this sentence? It is formed from the helping verb has or have with the past participle form. We use has and have as the helping verb, and the third form of verb, which is also called past participle form of verb, in the present perfect tense. The past participle form tells us that this is a perfect tense, and has have tell us that this is present perfect tense. Is it clear? Let's have an example. I have written an essay. I have written an essay. What type of sentence is this? इस सेंटेंस से हमें ये पता चल रहा है कि कोई एक्शन है. एक्शन क्या है? राइटिंग एन एसे. जो एक्शन है वो परफॉर्म हो चुका है बट इन प्रेजेंट. आई हैव रिटन एन एसे. हैव tells that this is a present tense and written tells that this is a perfect tense. Okay, now come to page number 23 and we are going to do the exercise. This exercise is also to be done on your book. Exercise statement is complete these sentences using the present perfect tense. We have given 8 sentences and we have to complete these sentences with the present perfect form of tense given in the bracket at the end of every sentence. And we already have learned that we use third form of verb with has and have, and the use of has and have depends upon the subject. अगर तो subject I, we, they, you या कोई plural होगा तो फिर have आएगा, otherwise has आएगा और साथ में verb third form. Let's begin. First sentence is a change in temperature dash the fungus to spread, and the verb is cause, and the present perfect tense will be has caused. A change in temperature has caused the fungus to spread. Second sentence is scientists dash the evidence, and the verb is see. Dear grade 6 students, think about it. What can be the solution of this sentence? What is the subject? Subject is scientists, which is a plural, और plurals के साथ हम has use करेंगे या have use करेंगे? Yes, we will use have with the third form of verb, which is seen, and the sentence will become scientists have seen the evidence. Third one is our science correspondent dash to the scientists, and the verb is speak. What is the third form or past participle form of speak? It is spoken.
Our science correspondent has spoken to the scientists. Fourth sentence is they want to find out if greenhouse gas dash the earth warmer, and the verb is make. And for present perfect tense, the sentence will become they want to find out if greenhouse gases have made the earth warmer. Are you doing this exercise on your book? Make sure to write down on your book with the lead pencil. Always use a lead pencil for your book or workbook. Never use ink pen on your book or workbook. Pen and ink pen are used in your notebooks, but for book and workbook you will use lead pencil. Okay, fifth sentence is temperatures dash by 0.5 degrees centigrade, and the verb is rise. The temperatures have risen by 0.5 degrees centigrade. Sixth one is the bookstore dash new science books to the school, and the verb is supply, and the present perfect sentence will be the bookstore has supplied new science books to the school. Seventh one is we dash always dash to school. We have always walked to school. And the last sentence is we dash a poster to encourage recycling, and the verb is make. We have made a poster to encourage recycling. Have you done this exercise? Okay, did you understand it? That's good. Now it's time for your homework. Please open your diary and note down your today's diary. Write down date. First of all, if you haven't written it yet, then subject is English, and then note down your today's homework, which is you have to do workbook page number 10. And on your workbook page number 10, if you open that, please open your workbook page number 10. Here are two exercises. First is for complete each sentence with the past participle of the verb in capital letters. आपको यहाँ पे हर सेंटेंस के साथ जो verb given है आपने उसका past participle यूज़ करना है, मतलब आपने उस verb का की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज़ करनी है. Next exercise is complete each sentence with the present perfect of the verb in bracket, यानी कि आपने has have के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, जैसा ही हमने क्लास वर्क में किया है. I hope you understood the complete lecture and you understood that what is to be done as your homework. Good luck dear grade 6 students. This is the end of today's lesson. Allah Hafiz.